there are many ways to analyze the reaction, but I'll give you two main rules. If you follow those rules, you will be absolutely perfect in giving your answers. आप champion बन जाएंगे electrolysis के. So what are those rules? Rule number 1, a reactive anode ionizes first. इसको समझ लें. Reactive anode का क्या मतलब है? This anode is going to be made from some material. This material can be reactive or it can be inert. तो आपके पास inert कौन कौन से होते हैं? You have inert material. आपके syllabus में one is platinum and the other is carbon, graphite. Yes, very good. I'm sorry? सर ग्रेफाइट और कार्बन अलग अलग नहीं है? नहीं, कार्बन के different forms हैं जिनमें से एक graphite है. The only form of carbon that conducts electricity is graphite. There is one more, but we don't work with that. Okay, sir. If you have any of these, platinum or graphite, then it's not reactive. So ये rule apply नहीं होगा. But if you have any other material, iron, copper, magnesium, वो reactive होगा, that anode will ionize. So अब आपके पास, for example, I have copper electrodes. So सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने कहना है ये copper anode जो है ये dissolve होगा, इसके copper ions बनेंगे. ये यहां से dissolve हो जाएगा. It will form ions. And that's the first thing you see when you look at any electrolysis question. The first rule is reactive anode ionizes first. The first thing you check, do I have platinum or graphite? Yes, leave this rule. No, make ions. That's it. Anode ka kaam khatam. Second rule, less reactive ion discharges first, except concentrated halide. अब इसको समझ लें. In any electrolysis, what is your goal? Your goal is to get ions, make atoms. Get ions, make atoms. So in this case, I had aluminum ions, I want to make aluminum atom. I had oxide ions, I want to make oxygen atoms which make molecule. That's your goal. How does that work? That process is called discharging. Aluminum ion has 3+. It changes to aluminum atom by gaining 3 electrons. That is discharge. It lost its charge. Oxide ion has O2-. It changes to oxygen atom and then molecule. That is discharge. What ion will discharge? Less reactive ion. So you're going to look at your ions. If you have positive ions, you'll see which one is less reactive. You'll see negative ions. You'll see which one is less reactive. Those will be the ones that discharge. Those will be the ones जिनका electrolysis होगा. उसके अलावा कोई भी हुआ उसका electrolysis नहीं होगा. Does everybody understand these rules? इन rules में किसी को कोई भी confusion है तो पूछें. सर अगर हमारे पास एक सल्फेट आयन और साथ में हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो तो हमारे पास ऑक्सीजन एनोड पे डिस्चार्ज होगा या फिर हमारे पास वो दूसरा सल्फेट आयन डिस्चार्ज होगा? देख लेते हैं. सल्फेट आयन है और एक्वस सॉल्यूशन है. That means you have sulfate ion and hydroxide ion. सर एक्वस कॉपर सल्फेट कर ले. चलें कॉपर सल्फेट कर लेते हैं. Good example. Let's work with it. Copper sulfate लेते हैं. Let's list all the ions that I have. I have copper ions, I have sulfate ions और water है तो H positive ions और OH negative ions. मेरा इलेक्ट्रोड कौन सा है? ग्रेफाइट है या कोई और है? Let's keep it simple. हमारे पास इनर्ट है. इनर्ट है. चलें जी ग्रेफाइट ले लिया. Now let's do it. पहला रूल अप्लाई होगा? नो सर. नहीं होगा क्योंकि इनर्ट है तो रिएक्टिव पे अप्लाई होता है. तो पहला रूल तो खत्म. दूसरे रूल पे आ जाएंगे. In the positive ions, which one is less reactive? Copper. So you will see copper form on the cathode. जो नेगेटिव साइड होगी उस पे कॉपर पिंक सॉलिड नजर आना शुरू हो जाएगा आपको. क्यों? लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्जेस फर्स्ट. अच्छा अब इधर आ जाते हैं. इन दोनों में लेस रिएक्टिव कौन सा है? हाइड्रोक्साइड.
सो आपको हाइड्रोक्साइड विल गो टू द एनोड। अब हाइड्रोक्साइड विल ऑलवेज ब्रेक डाउन एंड मेक ऑक्सीजन गैस, सो आपको ऑक्सीजन गैस नजर आएगी, मतलब उसके बबल्स नजर आएंगे। सर अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट होता तो फिर हमारे पास सल्फेट जाता या ऑक्सीजन? कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट हमारे सिलेबस में नहीं। ओके सर, तो सर अगर कॉपर सल्फेट नहीं कोई और सल्फेट होता, कंसंट्रेटेड होता, तो सर वो जाता? उसमें भी लेस रिएक्टिव वाला रूल आपने ये देखना है, ये अप्लाई करते हैं। सिर्फ सर व्हाट हेलाइट हैपेंस, सेकंड रूल होते हैं? अच्छा, आपके सिलेबस में सिर्फ हैलाइट का है,